Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll start our chapter number 6, that is the return and risk from investing. Over here we will be discussing and calculating important risk and return measures for financial assets using the formulation appropriate for the task. And also we will be discussing key terms involved in risk and return, which will be including geometric mean, cumulative mean, wealth index, inflation adjusted returns, and currency adjusted returns. And we'll also try to understand the risk and return investors have experienced in the past, and an important step, and which is actually an important step in estimating future risks and returns. Start with asset valuation. What is asset valuation? First of all, as the investor has planned to invest in different financial assets. These financial assets are capable of giving you returns, but all at the same time there are certain risks involved in different type of assets. So obviously you when you are investing in any type of asset, you have to consider both return and risk, because the main thing is that you want to have something back from your investment, which is actually called as return, but obviously there are certain risks involved in that in those returns. So you have to assess all these things while we are investing in certain assets. So because this is centered to the security analysis in which you are investing, then when we look into the historical risk return relationship, we can say that it's a very useful indicator, because these relationships will help us to determine the future risk and future association of risk and return. It should also be kept in mind that it's not 100% guarantee that what happened in the past would be would also be happen in the future. So there is no guarantee of that, but it's also important that that it's for every reason we have to assume that the previous relationship would be there in the future as well, and especially in the long run, because if we see that what is the relationship between treasury bonds and corporate bonds, or what type of returns which we are receiving in different type of common stock, or so all these things have certain relationship. And in certain financial markets there are different type of relationships. So these relationships would help you to determine the future trends, like when we say na trend analysis. So all these trend analysis would be done with the help of these past experiences, and it is very important, especially in the long run, when you are investing for a longer period of time. As you are investing for a longer period of time, obviously there is a liquidity risk involved in that, so you have to ascertain all these things. देखिए, जब हम एसेट वैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट में हम ये देख रहे हैं कि हम किसी भी एक ऐसे एसेट में पैसा डाल दें जो हमें कुछ बैक में दे, कुछ प्रॉफिट अर्न करके दे. सो ये जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो इसके बीच में एक जो हिस्टोरिकल रिस्क है ना, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, या प्रीवियस रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये नहीं है कि 100% इस चीज़ की गारंटी होगी कि जो प्रीवियस पास्ट में जिस तरह का सिनेरियो रहा है वो 100% आगे फ्यूचर में भी होगा. लेकिन ये भी बात नहीं है कि आप उसको बिल्कुल कंसिडर ही ना करें, क्योंकि वो आपके लिए एक बेस पॉइंट बनेगा, और उसी की बेस के ऊपर आप बताओगे कि आपकी फ्यूचर में रिलेशन किस तरह से रह सकती है, और फिर आप एक ट्रेंड बना लोगे. और ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट उस वक्त होता है जब आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पैसा ज़्यादा अरसे के लिए बंद हो रहा होता है. तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ की टेंशन होती है कि जब हम इतने अरसे के लिए पैसा बंद करें, हम अपनी बहुत सारी ऐसी स्पेंडिंग या कंजम्पशन पोस्टपोन कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमें इसके से क्या रिटर्न मिलेगा, और क्या रिस्क हैं जो उस रिटर्न को जो है ना वो मिनिमाइज कर सकते हैं. सो इस चीज़ में हम इसको देखते हैं. Returns components, मतलब when we are talking about return components, so what are the returns we are getting from different type of securities? So first of all, yield is something which we are getting
from the investment, that is extra from investment, that it might be periodic cash flow such as interest or dividends, like if you have invested in bonds or in any other type of credit instrument, so you'll be getting interest on that, or dividends if you have invested in certain type of equity, so you'll be getting the dividends from that, so that would be called as return on investments. So then measure returns relative to purchase or current price, that is actually called as um, return which we are getting from purchasing certain type of securities. The other thing is your capital gain or loss, that would be the change in the price of the asset that you have purchased as a bond, or purchase a security, or purchase a common stock, preferred stock. So if there is any appreciation or depreciation in the price of that security, so obviously you will be getting capital gain or capital loss from that type of securities. So you will be getting returns in two form. One is your yield, that is return on investment, and capital gain, that is return of investment with certain appreciation or depreciation. So total return would be the yield plus price change, and investors sometimes focus on only on yield, mostly because that yield is more important to him. देखिए, जब हम रिटर्न की बात करते हैं या जब कहीं किसी भी सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो उसमें आपके पास दो उसके कंपोनेंट होते हैं। एक उसकी यील्ड होती है, यील्ड मीन्स कि एक चीज़ में आपने पैसा डाला हुआ है तो वो आपको उसके बदले क्या दे रहा है। तो ये दो तरह की होती है, या तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और या तो आपको उसमें डिविडेंड्स मिल रहा है। इंटरेस्ट उस वक्त मिलता है जब आपने किसी भी को कर्जा दिया हुआ हो या कोई क्रेडिट उसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो वो आपको आइडेंटिफाइड जो है वो इंटरेस्ट देता है, और वो पहले से पता होता है, उसके बीच में कोई रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो डिविडेंड्स होते हैं वो एक्चुअली फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में से मिलते हैं, और ये ज़्यादातर कॉमन स्टॉक पे से आपको मिलते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो आपका कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस है। अगर आपने कोई सिक्योरिटी परचेज़ की है, उस सिक्योरिटी के परचेज़ प्राइस के बीच में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है। अगर आपने एक चीज़ 100 की खरीदी है और वो अब जो है वो 150 की बिक रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गेन। आपको ₹50 का या $50 का गेन हो जाएगा। सो दो तरह से आपको रिटर्न मिलते हैं, मतलब टोटल रिटर्न जो है तो एक तो यील्ड से आता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर बैक में जो आपको मिल रहा होता है, और प्राइस चेंज जो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उससे की जो प्राइस पे जो चेंजेस आ रही होते हैं उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है वो होता है। लेकिन जब हम बीइंग एन इन्वेस्टर बात कर रहे होते हैं, तो हम ज़्यादातर उस यील्ड की बात कर रहे होते हैं जो आपको उससे मिल रही होती है। When we are measuring returns of an asset, we have to compare performance over time or across different securities. Like when we are assessing securities, so first of all we have to see that how a security had performed in different time periods, and as then it made the comparison with other different type of securities. Then when we have to determine total return, so it can be determined by finding out all the cash flows associated or received from that security in certain time period, like the cash flows or might be of your yield, that is in a form of interest or in a form of dividends, or the cash flows might be in a form of capital gain or capital loss, or it has been decreased due to capital loss. So we have to consider all these things. So this CFT is actually the yield, that is the return of return which we getting from the security in a form of interest or dividend, and PE minus PB is actually the difference in the price. The first thing is the PB is actually the price at which you have purchased that security, and PE is the price at which you have sold that security. Finding out these things, we'll be getting the total return. So total return is equal to CFT plus price, current price minus the previous price divided by the previous price. So you will be getting the total return. So इसमें जब हम measure कर रहे हैं ना returns, so एक तो ये है कि हम जब return किसी चीज़ की, किसी भी security की measure कर रहे होते हैं, तो हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि एक security ने मुख्तलिफ time period में किस तरीके से perform किया, और फिर उसका comparison करते हैं different और securities के साथ जो भी आपने आपके comparison में होते हैं। तो उसके साथ हम जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कोई security जो है वो over time और किसी
किसी की सिक्योरिटी के कंपैरिजन में उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, और फिर उसी की बेस के ऊपर फिर आप डिसीजन लेते हो कि आपने कौन सी सिक्योरिटी को परचेज करना है। फिर जब हम उसका टोटल रिटर्न किसी भी सिक्योरिटी को देखना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि किसी कोई सिक्योरिटी जो है उससे आपको क्या कितने अमाउंट में कैश फ्लोज मिल रहे हैं। वो कैश फ्लोज आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। वो प्राइस कैश फ्लोज आपको प्राइस अप्रिसिएशन में से भी, या अगर वो लो कैश फ्लोज हैं तो प्राइस अप्रिसिएशन के सेंस में मिलेंगे। सो जब हम टोटल रिटर्न देख रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो आप इसमें आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, तो CFT का मतलब ये है कि आपको किसी भी सिक्योरिटी पे किसी भी टाइम पीरियड पे कितना डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला है, प्लस PE इज़ एक्चुअली वो प्राइस है जिस पे आपने किसी सिक्योरिटी को सेल किया है, और PB इज़ वो जस्ट प्राइस पे उसको आपने परचेज किया था, डिवाइडेड बाय PB। PB जो है ना उसकी आपकी परचेज प्राइस है या उसकी प्राइस बिफोर जो भी आपकी है वो है, उसके मुताबिक आप देखते हो। तो उसके बीच में जो भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है वो फिर आप उसको देखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं PB पे, तो आपको टोटल रिटर्न मिल जाता है कि आपको एक सिक्योरिटी जो आपने परचेज की है उससे आपको कितना टोटल रिटर्न जो है वो मिल रहा है। या अगर आपने उसको उसकी एनालिसिस करें रिटर्न्स की, तो मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ को आप देखें कि वो उसकी एक साल के अंदर या टाइम पीरियड पे कितनी अप्रिसिएशन हुई है, कितनी डिप्रिसिएशन हुई है, कितना रिटर्न हुआ है, और उसकी बेसिस के ऊपर आप उसका टोटल रिटर्न देख के फिर आप मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ के साथ कंपेयर करें या ओवर टाइम उसको कंपेयर करें। So, in case of measuring return, when we are calculating total return, so majority of time when we are calculating total return, we had a problem because of negative returns, and it create problem when we are using cumulative or compounding, or it will create problem. Same is the case when we want to calculate geometric mean or cumulative wealth index, so it cannot be calculated with negative figures. So in that case we will be introducing another term that is called as return relative, which actually solve the problem because it is always a positive. And why it is always positive? Because when it only add 1 to the total return. So when adding 1 to the total return, the negative aspect of total return will decrease. It will give the same information as the total return, but when you add 1 to it, the negative aspect would be declined from that. So the formula of relative return is actually the cash flow from a security plus the current price divided by the old price, which is equal to 1 plus total return. So the formula we'll be using for return relative would be 1 plus total return. देखिए यहाँ हम जब रिटर्न मेजर कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम टोटल रिटर्न निकाल रहे होते हैं तो वो उसमें कभी ना कभार नेगेटिव फिगर्स भी आते हैं। लाइक ज़्यादातर केस उस वक्त होता है जब आपका प्राइस कम हो रही होती है। अगर आपने इतनी चीज़ 100 की खरीदी और वो अभी 90 की हो गई है या 80 की हो गई है, तो उसके बीच में उसका नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है ना वो रिटर्न जो होता है टोटल रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। और वो जब आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो या आपने क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स निकालनी हो, वेल्थ इंडेक्स निकालनी हो, सो उस केस में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव को उसमें नहीं कैलकुलेट हो सकता। सो इस केस के लिए तो फिर हम यूज़ करते हैं रिटर्न रिलेटिव यूज़ करते हैं। रिटर्न रिलेटिव में सिंपली आप क्या करते हो कि जो टोटल रिटर्न आता है उसके बीच में आप 1 ऐड कर देते हो। वो इन्फॉर्मेशन आपको सेम देता है, लेकिन उसमें ये होता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट जो है ना वो उसका ख़त्म हो जाता है। Now in measuring return, we also use wealth index, cumulative wealth index, and this cumulative wealth index is actually used to ascertain that when you are making an investment in certain security, so how much it has affected on your whole wealth or your initial investment. So to measure return in dollars and reflect compounding returns over time period, when we take a specific initial investment, we use cumulative wealth index. Cumulative wealth index will be used over time, like when you see the formula. So cumulative wealth index is actually 1 plus TR1, like the total return from period 1, 1 plus TR2, that is total return from 2, and so on till return from n. So in that case we will determine the
cumulative wealth index. Actually, the wealth index is the beginning index value. Just typically, mostly we will use $1 is used, but you can use any amount that you have put in your investment. And actually, TR is the periodic total return in decimal form. When adding one to an equation, they become relative return relative. लेकिन देखें, ऐसा होता है कि जब हम रिटर्न मेजर कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये भी देखना होता है कि आप जो पैसा किसी भी सिक्योरिटी में डाल रहे हो, उसमें आपकी वेल्थ के ऊपर या जो आपने उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी वैल्यू में क्या चेंज आया है. सो उसके लिए आप क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स यूज़ करते हो. क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स देखने के लिए आप ये देखते हो कि जितने पीरियड में आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस हर पीरियड में आपको टोटल रिटर्न कितना मिला है, उसमें आप 1 ऐड करते हो और फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हो और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हो जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है. यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू $1 ले लेते हैं और आप कहते हैं कि अगर एक किसी भी सिक्योरिटी में अगर आप $1 डालेंगे तो उसका आपकी क्यूमुलेटिव वेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा. सो वो $1 के ऊपर आपको दे देता है. लेकिन आप जो है उसमें कोई भी अमाउंट ले सकते हैं क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सकती है. और अगर आप ये जो टोटल रिटर्न जो है आपका, जो आपको यहाँ पे गिवन है, वो डेसिमल फॉर्म में आते हैं और जब इसके बीच में आप 1 ऐड कर दो तो ये तो टोटल रिटर्न आपका रिटर्न रिलेटिव बन जाता है, जो भी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया. How measuring international returns, like when we are investing in international market, so another aspect would also enter, that is your exchange rate risk, because when you are investing in different countries, you will be dealing in different different currencies. So exchange rate risk involved with that. So when you buy a foreign asset, you must use the foreign currency, so you must first exchange home currency. If foreign currency depreciate, returns lower in the domestic currency terms. So you have to consider the exchange rate risk when you are investing in international market. So how you will be measuring the total return in domestic currency? So what you will do is RR is return relative multiplied by ending value of foreign currency divided by beginning value of foreign currency and -1. So you will be getting total return in domestic currency with the help of this formula. आप देखिए, इसमें इस वाले केस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में या जब इंटरनेशनली अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है. तो उसमें आपके पास एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब आप बाहर के मुल्क में कोई भी एसेट परचेज करेंगे, कोई भी सिक्योरिटी परचेज करेंगे, तो वहाँ के लिए आपको अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन करनी होगी. सो इस कन्वर्जन में कभी आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कभी कम पैसे मिलेंगे, और अब करेंसी डिप्रिशिएट भी होती है, अप्रिशिएट भी होती है. सो उस चीज़ में फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. एक तो आपका जो रिटर्न है जो आपको इसकी सिक्योरिटी से मिल रहा है, एक तो वो है, प्लस आपने फिर उसके बीच में इस करेंसी रिस्क को भी इन्वॉल्व करना है. सो उसके लिए आप क्या करते हो, जब कि आप टोटल रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी करने के लिए आप रिलेटिव रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपकी करेंसी की आज की वैल्यू है, जो आज करंट एंडिंग वैल्यू जो हम आज देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, जो आपने स्टार्ट में जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे जो करेंसी की वैल्यू थी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर इस टोटल से 1 माइनस कर देते हो, तो आपको इसका जो है वो टोटल रिटर्न डोमेस्टिक करेंसी में आ जाता है. Now measuring and describing a return series, like when we measure total return, return relative and cumulative wealth index, they are useful for giving a single period information, like we are measuring the total return or return relative or cumulative wealth index for a single period. But obviously when we have to assess the performance of certain securities or performance of certain type of investment, so in that case you will have to summarize return over several period of time. So in that situation we will be using arithmetic mean or simple mean. This is actually can be measured with the help of this formula, that x bar is equal to summation x divided by n. We will be calculating the total summing the total return and divided by the number of periods or whatever we are using. So arithmetic means can be simply used to summarize the average return of these securities. Like देखिए, जब हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं या रिटर्न रिलेटिव की बात करते हैं या क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं, तो इस
केस में हम ये चीज़ तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास सिंगल पीरियड में देख रहे होते हैं, लेकिन हमें जब मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ की ओवर द ईयर या ओवर द सिक्योरिटीज़ जो हैं वो हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें कैसा जो है वो मेजर भी चाहिए जो उन तमाम रिटर्न्स को समराइज़ करे और हमें बताए कि ऑन किस तरीके से जो है ना वो ये रिटर्न आ रहे हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ के लिए। तो उसके लिए एक हम अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं जो हमें एवरेज दे के बताता है कि कोई भी सिक्योरिटी जो है वो आपको ऑन एवरेज जो है ना ओवर द ईयर्स जो है वो कितना रिटर्न करके दे रही है, तो उसको हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। Now, arithmetic mean will obviously give you an overall average return for a security, but it cannot give you a compound effect or compound growth of a security over time period. And obviously, when it is being compounded, so it had been a change in the wealth over multiple period. So that kind of effect cannot be measured with the help of arithmetic mean, and it cannot also capture a typical return in a single period. So for measuring these kind of return, we will be using geometric mean, and as geometric mean will help you to reflect a compound and cumulative returns over more than one period, and also in a multiple period as well, because this geometric mean shows a two average compound growth rate. अगर हम इसमें देखें ना तो अरिथमेटिक मीन जो है ना वो सिर्फ आपको सिंपली रिटर्न्स की एवरेज बता रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो जब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की तो हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट्स के साथ देखते हैं कि एक पीरियड में अगर आपने कुछ रिटर्न जो है वो अर्न कर लिया है तो उसको ओवर द पीरियड वो आपको कितना हेल्प करेगा और आपकी ग्रोथ में कितनी चेंजेस आएगी, ग्रोथ जो वेल्थ की ग्रोथ है उसमें क्या चेंजेस आएंगी अगर वो मल्टीपल पीरियड में आप उसको यूज़ करेंगे। और जो टिपिकल रिटर्न सिर्फ हमें बताता है सिंगल पीरियड का अरिथमेटिक मीन, और इस किस्म का जो रिटर्न जो हमें कंपाउंड कम्युलेटिव रिटर्न्स जो मोर देन वन पीरियड के होते हैं उसको वो जो है ज्योमेट्रिक मीन्स हमें बताते हैं और हमें बताते हैं कि मल्टीपल पीरियड्स में अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के रिटर्न्स हो तो आपको ट्रू एवरेज ग्रोथ कंपाउंड ग्रोथ रेट क्या होगा। सो उसके लिए हम फिर ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। Now, what is geometric mean? And when we talk about geometric mean, it is actually the nth root of the product of n return relative minus 1. What we'll do is we'll multiply all the total return, like 1 plus total return for one period for multiply by 1 plus total return for period second, and so on up to the nth period, and we'll take the nth root. N is actually the number of period minus 1. So this will give us a geometric mean. We have already done this in the class in the previous chapter. तो अगर आप देखें तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन जो है ना उसमें हम मतलब nth रूट का मतलब ये है कि जितने पीरियड का आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उसका आपने रूट ले लेना है, और फिर उसके बाद जो है आपने वो जितने भी आपके पास रिटर्न है टोटल रिटर्न है उसमें +1 करके आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है और उसका जो है वो nth रूट ले लेना है, उस पर में से 1 में से माइनस कर देना है। सो आपको ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मिल जाएगा। Then adjusting returns for inflation. It's also very important because inflation is a concept of trend of rising prices. So when you are measuring a return for yourself, so it's very important that you should consider inflation, and in this case return measures are nominal, that is are not adjusted for inflation. When you will see the returns, so these are nominal, they are not adjusted for return. So we have to see for the inflation as well, because the change of purchasing power of investment may change over time, and if you look into the nominal return, so the nominal return is equal to real return plus expected inflation rate. So consumer price index is possible measure of inflation. CPI is actually the possible measure of inflation. TR inflation adjusted, like I means inflation adjusted, is equal to 1 plus T divided by 1 plus CPI, that is consumer price index minus 1. So you can easily adjust inflation with the help of this formula. लेकिन जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो आपको जब रिटर्न मिल रहे हैं और हमें ये भी पता है कि टाइम टू टाइम आपकी महंगाई बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन
उसी चीज़ का इंडिकेटर है कि आप जो जो टाइम्स गुजरता जाता है आपकी जो किसी भी चीज़ की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट डाली हुई किसी भी चीज़ में, सो उसका परचेजिंग पावर जो है वो चेंज हो रहा होता है फिर विद पैसेज ऑफ टाइम। सो अगर हम नॉमिनल रिटर्न को देखें तो वो उसमें रियल रिटर्न जो एक्चुअल मिल रहा होता है उसके बीच में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का भी आपको जो है वो एक प्रीमियम जो है वो मिल रहा होता है। आप जब इन्फ्लेशन मेजर करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन मेजर करने का जो मतलब जो ईजीएस्ट तरीका है वो ये है कि आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लें। सो उसकी मदद से फिर आप जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। सो उसके लिए हम टोटल रिटर्न जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं उसमें आप क्या करते हो कि 1+TR कर लेते हो डिवाइडेड बाय 1+CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और -1 कर देते हो। इससे हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड टोटल रिटर्न मिल जाते हैं। Risk is another aspect of your investment, and it's very important because when we look into the risk, it is actually the opposite side of same coin, risk and return. And when we say that risk is there, or the risk is a chance that the actual outcome from an investment will differ from the expected outcome. As when you are measuring return, so you will be assessing returns of security at the same time period, but it might be possible that you will not get that amount of return as you expected. So the chances, when the chances increase that you will not get the amount of return, so that means that it's the risk of that security increases. But another aspect of risk is that investor wants to bear risk if he is being paid by large amount of return. And the same happens when we look in different secured returns of different securities. You'll see that the securities which have minimum risk will be paying minimum return to their investor. So the negative thing of risk is that might the money is lost by the investor because due to having due to bearing or due to expecting too much return from a security. But the is there that you will might lose all of the amount which you have invested in security if you invest in too much risky investments. There are different sources of risk. First of all, it might be interest rate risk, that your interest rate which you are getting from your security or investment would increase or decrease due to many reasons. That is actually is interest rate risk. Secondly, there is market risk. Market risks arise from recession in the market, when there is a war-like situation, or the market is not very stable. So that kind of risk is called as a market risk. Then third one is your inflation risk. Inflation risk associated with the increase and decrease in the purchasing power or purchasing power variability. Then there is a business risk. Business risk involved that there might be certain situation which can decline in the sales of the company and so on, many other type of things. So that would be called as business risk. Then financial risk is actually tied to debt financing. Then how much debt you have incorporated into your business, so that is called as your financial risk. Then liquidity risk is the marketability of security in the secondary market. That means that how risky is your investment if you have invested in certain securities which are not very marketable. Obviously when there is more marketability of the security, so there is less of liquidity with that, liquidity risk with that. Then a currency risk is associated with exchange rate risk, and when you are in investing in international market, so this type of risk is involved in that kind of situation. Then a country risk is related to the political stability of the country, that when there is political stability in the country, so obviously you will be having less country risk, but vice versa. Now, how you will measure risk? As we have discussed, that risk arises from variability of outcomes. Like there is chances that you will be not getting the required amount of return on time, and so on. There are many other type of risk involved in that. So, variance and standard deviation measure variability. So, the measurement of risk is variance and standard deviation. And what is standard deviation? Actually, standard deviation is the square root of the variance. That S is equal to summation x minus x bar
square divided by -1 under root. So we can say that with standard deviation we can measure the risk of certain securities. Then when we talk about different types of risks, we have two type of risks. One is systematic risk and the other one is non-systematic risk. A systematic risk is also called as a general risk that is pervasive, affecting all the securities, and it cannot be avoided. It cannot be diversified with the help of portfolio as well. So interest rate or market or inflation risks are involved in this general or systematic risk. But there is another type of risk that is called as non-systematic risk, and that is called as specific risk, and it is actually unique to certain specific company or certain specific individual, and or unique characteristic to specific issuer, like a death of a CEO or any other kind of situation, or certain laws which are affecting only certain kind of industries. So that is called as a specific risk. So total risk is actually जनरल रिस्क पर स्पेसिफिक रिस्क. लाइक हम जब रिस्क की टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. एक वो रिस्क होता है जो आपने जितना जो भी सिक्योरिटीज आप लोगे उन सब पर जनरली अप्लाई होगा. इसके बीच में इंटरेस्ट रिस्क भी हो सकता है, मार्केट रिस्क भी हो सकता है और इन्फ्लेशन रिस्क भी हो सकता है. लेकिन जब हम नॉन सिस्टमैटिक रिस्क या स्पेसिफिक रिस्क की बात करते हैं तो वो किसी खास इंडिविजुअल इंडस्ट्री या खास इंडिविजुअल कंपनी के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन सिस्टमैटिक रिस्क. और जो आपका टोटल रिस्क होता है उन दोनों की कॉम्बिनेशन में होता है, general plus specific risk. Now risk premiums, actually the risk premium is that part of security which securities return which is above the risk free rate, and it can be calculated or can be said that it measures the payoff for taking various types of risk. Such premium can be calculated for two classes of security. For example, a time premium measures the additional compensation for investing in a long-term security. Treasuries versus treasury bills, and default premium measures the additional compensation for investing in risky corporate bond versus riskless treasury securities. So as treasury bills and treasury bonds have less risk as compared to stocks, we will discuss the different type of premium which is given to the stocks, because they are bearing more risk as compared to treasury bills or treasury bonds. लेकिन देखें आप रिस्क प्रीमियम की जब हम बात करते हैं तो रिस्क प्रीमियम जो है ना वो अमाउंट होता है रिटर्न का जो आपको इसलिए दिया जाता है कि आप उसके लिए एडिशनल रिस्क जो है वो बेयर कर रहे हैं. सो हम देखते हैं तो ये हम दो तरह की क्लासेस भी इसको कैलकुलेट करते हैं. इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो होता है ना वो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप स्टॉक्स ले रहे हैं तो आप उसको देखते हैं कि ट्रेजरी बिल्स पे क्या रिटर्न मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड फिर आप देखते हो कि आपको स्टॉक्स पे जो है वो एक्स्ट्रा जो मिल रहा होता है वो आपका रिस्क प्रीमियम होता है. इसी तरह ट्रेजरी बॉन्ड्स को अगर आप देखते हैं तो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं. स्टॉक्स जो हैं वो आपकी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप ट्रेजरी बॉन्ड जो हैं वो रिस्कलेस हैं, और इसके भी में टाइम रिस्क तो है, लिक्विडिटी रिस्क तो है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है. तो आपको स्टॉक्स जो है तो फिर वो उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क और वो भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको इसके ऊपर ज़्यादा रिस्क प्रीमियम मिलता है. Now, how we calculate equity risk premium? Because when you are investing in stocks, so obviously you will be getting equity risk premium. So that is 1 plus total return on corporate common stock divided by 1 plus risk-free rate minus 1. So you will be getting the risk premium for equity risk premium for your equity. Now, once we talk about cumulative wealth indexes, cumulative wealth index can be decomposed into dividend component, cumulative dividend yield, or price change component, that is CPC. So, cumulative wealth index is equal to CTY multiplied by CPC. So, अगर हम देखें ना कि हम कहते हैं cumulative index जो है ना वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो आप cumulative index को जो है ना वो असल में दो पार्ट्स होते हैं. एक आपको डिविडेंड कंपोनेंट होता है जो आप डिविडेंड्स वगैरह जो आप को मिलता है उसके ऊपर जो यील्ड होती है, मतलब टोटल जो कम्युलेटिव का मतलब होता है ना, टोटल जो डिविडेंड यील्ड होती है जो आपको मिल रही होती है. इसके अलावा जो सीपीसी है वो आपका प्राइस चेंज जो हो रहा होता है, आपकी अगर प्राइस इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है उसको हम देखते हैं. तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कम्युलेटिव वेल्थ इंडेक्स जो है वो मिल जाती है.